Hello everyone, welcome to my channel Everything with Wills and welcome to another video. And today we're going to learn the word rather, the usage of the word rather, that how we can use this word separately when we are not using the word then. We are only using the word rather. How can we use it? So let's get started. Okay, rather is an adverb which is used to modify the degree or intensity of an adjective, adverb, or sometimes verb while comparing it with something or someone. So rather basically एक adverb है जो कि किसी verb, adjective या adverb पे जोर देने के लिए या उसको modify करने के लिए, modify से मुराद उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए, उसकी डिग्री बताने के लिए कि वो थोड़ा ज्यादा, कम, कितना, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, बेहतरीन, बुरा क्या है। तो किसी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी या डिग्री को बताने के लिए उसकी मिकदार, उसकी क्वालिटी की मिकदार, ठीक है, कि कितनी, किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस जब हम उसे किसी और के साथ, किसी और चीज के साथ या किसी शख्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, उसकी मीनिंग उर्दू में होती है जरा। इस रादर की मीनिंग होती है जरा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रादर इन उर्दू और इन हिंदी, दैट इट मींस जरा इन उर्दू, so you would automatically be able to make sentences using this word rather. Now, I've just given you a rough structure that mostly when we use it, we use subject, helping verb, rather, and any adjective. Any adjective. For example, now the subject is my this son. These three words are the subject. My this son is rather shy. Now, subject is my this son. These three words are subject, then helping verb is, then the word rather, and then adjective shy. My this son is rather shy. मेरा ये बेटा जरा शर्मीला है. So now when you say this kind of sentence, that my this son is rather shy, so on the other hand, or at the backhand, you are comparing your this son with the others. You're trying to say that your this son is shy as compared to the other sons. ठीक है, मेरा ये बेटा जरा शर्मीला है, तो इसका मतलब है कि बाकी नहीं है, ये जरा उनको कंपेयर करते हुए कह रहे हैं दिस रूम इज रादर कोल्ड। हाँ, ये रूम जरा ठंडा है। तो ये याद रखिएगा, उसी वक्त कहा जा रहा हो जब आपने पहले, इससे पहले किसी और कमरे में बैठे थे जो गर्म था, तो शायद आप दूसरे रूम में आए और आप कहते हैं दिस रूम इज रादर कोल्ड, ये रूम जरा ठंडा है। उर्दू में भी जब हम ये कहते हैं ना कि हाँ ये रूम, या हम कहते हैं ये रूम जरा ठंडा है, तो इसका मतलब है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और रूम से जो ठंडा नहीं था। नंबर 3 देखिएगा, दिस एक्सरसाइज इज रादर डिफिकल्ट। ये एक्सरसाइज जरा मुश्किल है, ये वाली एक्सरसाइज जरा मुश्किल है। माई संडे इज ऑलवेज रादर हैक्टिक। माई संडे इज ऑलवेज रादर हैक्टिक। मेरा संडे हमेशा जरा मसरूफ गुजरता है, जरा बिजी सा रहता है। हैक्टिक का मतलब आमतौर पे होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं आप, मसरूफ हैं आप, टाइम नहीं मिल रहा। सो माई संडे इज ऑलवेज रादर हैक्टिक। मेरा संडे हमेशा ही जरा मसरूफ होता है। So I am sure that you have understood this, the use of this word rather in another way, and which you might not have been using before, and it is really stylish way of using the word rather. And if you've really understood this very well, now please prove me by making your sentences and typing them in the comment section so that I can correct them, I can rectify them. Now this is your turn to make sentences using the word rather with the meaning in Urdu zara. Zara, when you're comparing someone or something with somebody else or to somebody else, and then you're using the word rather in Urdu zara. ये कमरा जरा ठंडा है, मेरा ये दोस्त जरा इंट्रोवर्ड है, ये वाली किताब जरा महंगी है, ये वाला दिन मेरा जरा मसरूफ गुजरता है. So you can use in multiple ways if you want, and normally you use this word rather in your
daily life sentences. I'm sure that you will be able to make the sentences very easily. So I'll be just looking forward to seeing your sentences into the comment section. And in the next video, you take the very best care of yourself. Bye bye. See you later.